Everyone, welcome to Unacademy and welcome to our channel, that is Unacademy CAT4MBA. So guys, this is the fourth session of geometry जहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ mensuration. So आज के सेशन में most of the thing में teaching रहेगा. I'll be taking you through formulae and few links to remember those formulae. And हम सारे 3D shapes cover करेंगे आज. Each and everything we'll be learning the formulae today and how to remember the formula. I'll be just connecting few things with the prior sessions, and after that आज के क्वेश्चंस में आज के सेशन में क्वेश्चंस थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहेंगे, बट क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा हाई होगा. I'll be just solving few of the questions. So mostly ये सेशन उनके लिए है जिनको मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद कैसे रखने ये सीखना है. ओके, सो hopefully most of the formulae तुम्हें already पता होंगे, and if not, I'm there to help you out here. And guys, the fifth session of geometry I have kept, that will be a mixed practice starting from our lines, triangles, then quadrilaterals, circles, and this part mensuration. So ये चारों सेशन के mixed practice. और नेक्स्ट सेशन जो रहेगा फिफ्थ सेशन ऑफ ज्योमेट्री, उसमें मैं कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी. सो आज क्वेश्चंस थोड़े से लेवल मॉडरेट टू हाई ही रहेगा, बट क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी लेस, बट the formulae and all these things we are going to learn in next 1 hour, and we'll learn how to remember that also. So let's begin. Those who are watching me for the first time, let me quickly introduce myself, guys. My name is Shyam Jagrut, and I have been training the student for CAT and other MBA entrance exams for last 8 years, and I have trained more than 7,000 students for MBA entrance exams. I do teach the students for quantitative ability, logical reasoning, and data interpretation. So guys, the agenda for today's session, I already told you that हमें mensuration के जितने भी 3D, surface area, volume, ये सारे फॉर्मूले याद कैसे रखने हैं ये सीखना है. and most of the formulae will be dependent on our 2D जो हमने पढ़ा. Hello everyone. Oh, Sunny Deval is there. Okay, so let's go ahead. So guys, next half an hour, if you know the formula, you can just quickly drop in the comment section, and few things definitely तुम्हें सीखने को मिलेगा कैसे याद रखने हैं. Okay, so let's start. Those who are new to our channel, guys, quickly subscribe to our channel, that is Unacademy CAT4MBA, and you can also join us on Telegram CAT4MBA, where you'll be getting the PDF notes for the session that we conduct on YouTube as well as on Unacademy platform. So these are the plus subscription of Unacademy's. These are amazing subscription. You'll get the mock test and complete support for your preparation. And from next Friday, 21st August, I'm going to launch a plus course which will be on numbers. So numbers तुम्हें पता है सबको, CAT में almost 5-6 questions normally आते हैं, and मैं complete number module complete करने वाला हूँ. That will be close to 8 to 10 hours of a course. And after that, I'll be having few more plus courses related to other module, combination, and all these things. So plus course में मैं सारी चीजें वापस cover करूँगा. So I'm going to start with the numbers. So those who are willing to go for this plus subscription, do not forget to use this code, which is SHYAM1 SHAM1 to avail 10% of discount. So guys, let's begin. Hopefully all of you are ready. चलो लेट्स बिगिन. सो एज आई सेड, मैं फॉर्मूले बताते जाऊंगा, एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले तुम्हें पता होंगे. सो एरिया ऑफ स्क्वायर तो सबको पता होगा. इट इज नॉट स्क्वायर, डेफिनेटली इट्स अ क्यूब. मैं स्क्वायर क्यूब बोल रहा हूँ क्योंकि क्यूब के जो सरफेस है दैट आर स्क्वायर सरफेस, राइट. सो नंबर ऑफ वर्टेक्स, यू कैन से 8 वर्टाइसेस है, कॉर्नर्स हम बोल सकते हैं. देन वी हैव 6 फेस. देन नंबर ऑफ एज अगर चाहिए तो टॉप में 4 एज, रियली बेसिक थिंग. देन बॉटम 4 एज एंड 4 हाइट, दैट कम्स आउट टू बी 12 एज, रियली इंपॉर्टेंट. ये क्यूब कटिंग में भी अलग से काम में आ जाएगा तुम लोगों को, ये बेसिक चीजें. ओके, तो क्यूब कटिंग इज अ डिफरेंट टॉपिक, दैट्स अ लॉजिकल रीजनिंग. उस पर भी काफी बार कैट में क्वेश्चन आ चुके हैं पहले. सो टोटल सरफेस एरिया, डेफिनेटली एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर. सो देयर आर 6 सरफेस एरिया. हाइट ज्यादा होगा तो कैपेसिटी ज्यादा होगा, बट एट द सेम टाइम
डिपेंड करेगा कि उसका बेस एरिया कितना है. अगर ये एरिया ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स कैपेसिटी ज्यादा होगा. सो कैन आई से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट. So area of base is a square into height is a here, so that's why it is a cube. तो ये मैंने intentionally बताया है, so you'll get to know मैं ये क्यों बता रहा हूँ after the next. जब हम एक दो 3D shapes देखेंगे तो मैं समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ. Okay, after that we have length of the body diagonal. Body diagonal मतलब क्या होता है guys? अगर ये square है, sorry ये cubical box है and it's a hollow box and इसका thickness बहुत negligible है, you can say. Then if I want to put a rod, what can be the maximum possible length of that rod that can be fit into this box? It has to be, हमें ये diagonally ऐसे रखना पड़ेगा, that is the body diagonal. but देखो ये square का diagonal नहीं है, ये 3D shape है. Okay, so let's understand ये कैसे आएगा. अगर मैं यहाँ पे नीचे का प्लेन जो रहता है, नीचे का सरफेस ले रहा हूँ, बॉटम सरफेस का ये साइड ए है, सारे साइड से ए है. सो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज a root 2. तो ये a root 2 है, ये a है. इफ वी सॉल्व दिस व्हाट विल हैपन, और सिंपली आई विल डू वन थिंग. कैन आई राइट दिस as square root of a square plus a square? दैट्स सिंपल पाइथागोरस थ्योरम. ये राइट एंगल ट्रायंगल है गाइस, ठीक है, बॉटम सरफेस. After that we have this height. So ये एक triangle बन रहा है. This height will be perpendicular to this bottom plane, bottom surface. So definitely एक और right angle triangle यहाँ पे बन रहा है. So if you want to get the body diagonal, इसका square करोगे तो ये square root हट जाएगा. So a square plus a square plus a square 3 times. So body diagonal has to be, मैं यहाँ पे explanation लिख देता हूँ. It should be a square plus a square plus a square, which is square root of 3a square. That has to be a root 3. That's the body diagonal of cube. So hopefully all of you understood this. So let's go ahead. I'm not getting why the comments are delayed. CGL mains, yes, definitely. You're talking, hopefully you're talking about SSC CGL. That's definitely, it is important for that also. So I have trained the students for even for bank PO and SSC CGL as well earlier. See guys, CAT में जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, देखो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ये जो बेसिक चीजें, ये सारे कोई भी तुम एप्टीट्यूड ले लो, इवन बैंक पीओ में भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोलूंगा मैं. Not only SSC CGL, but definitely SSC CGL के लिए भी important है. So do you know this formulas? ये फॉर्मूले पता है सबको? Have you appeared for the SSC CGL earlier? Okay, let's go ahead with this. Cuboid. क्या चेंज होगा guys? Cuboid में simple one thing for cuboid is this is length into breadth into height. Okay, so this is LBH. That's the only change. वहां पे तीनों जगह पे, वहां पे लेंथ ब्रेथ हाइट की जगह सब जगह क्यूब में सारे एजेस तो जो थे वो ए थे. ओके, सो नंबर ऑफ वर्टेक्स विल रिमेन सेम 8. नंबर ऑफ फेस, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट एंड टॉप एंड बॉटम, अगेन 6 फेस. ये तो चेंज नहीं होने वाला है. नंबर ऑफ एज विल रिमेन 12. टोटल सरफेस एरिया, I am quite sure all of you will be able to answer this. देखो, अगर मैं फ्रंट सरफेस की बात करता हूं, ये है लेंथ इंटू एच. अब ऐसे ही मुझे फ्रंट और बैक, ये दोनों भी सेम है, फ्रंट एंड बैक. सो कैन आई से इट इज ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस, चलो आई रिमूव दिस. देन अभी बात करते हैं टॉप एंड बॉटम. टॉप एंड बॉटम अगर मैं बात करता हूं, लेंथ इंटू ब्रेड, दिस विल ऑल्सो लेंथ इंटू ब्रेड. सो कैन आई से ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस b into h, b into h, that has to be twice of bh.
So you can simply remember this formula, twice of LB plus BH plus LH, जैसे भी तुम्हें याद रखना है, whichever is comfortable to you, that's what you can remember. Then volume, I'm quite sure ये बताने की जरूरत नहीं है अभी मुझे. Are you there? Okay, let me check the comment ones. Okay. Volume, area of the base is length into breadth and height is h. So volume of cuboid has to be L into B into h. After that, length of the body diagonal. वहां पे क्या था guys? Length of the body diagonal, it was a square plus a square plus a square. यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा? अगर मैं बॉटम प्लेन का डायगोनल लेता हूं, this is under root of L square plus B square. This will be h square, and this is the body diagonal we are supposed to find. Hopefully you understood this part. This is the body diagonal. Okay, so I have drawn this plane. This diagonal will be under root of L square plus B square. And ये जो height है ये पूरे plane को perpendicular होगा. So bottom surface को perpendicular होगा. That's what I mean to say. So this has to be under root of L square plus B square plus H square. Of course body diagonal जो है इस पे depend करेगा LBH. So L square plus B square plus H square. Let's go ahead. Surface area. Now this is quite important, and students, I don't know what's the confusion student have in this, but बार बार तुम लोग ये फॉर्मूले भूल जाते हो. That's the common thing which I have observed. I don't know what's tough in this. Okay, let me just quickly tell you कि वॉल्यूम तो सबको याद होना चाहिए guys. मैंने जो बताया तुम्हें अभी, क्या बताया था मैंने वॉल्यूम के लिए? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. इससे इजी कुछ नहीं है याद रखने के लिए. क्या होगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ बेस? लेट्स से दिस इज द रेडियस r. सो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ सर्कल तो सबको याद रहता है, पाई r स्क्वायर. इस एरिया पे डिपेंड करेगा और हाइट पे डिपेंड करेगा, राइट? सो पाई r स्क्वायर इनटू h, दैट्स द वॉल्यूम, राइट? अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे. ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया पहले देख लेते हैं. सुनो, कर्व्ड सरफेस एरिया सिंपली मींस ये जो लेट्स इमेजिन व्हाट आई एम टॉकिंग नाउ. चलो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. लेट्स से ये सिलेंडर है, इट्स मेड ऑफ पेपर एंड इट्स कंप्लीटली हॉलो इनसाइड. एंड मैंने क्या किया, इसका जो ये सर्कुलर फेस है ये हटा दिया, एंड ये टॉप भी हटा दिया, बॉटम भी हटा दिया. सो इट विल बी जस्ट लाइक ए पाइप, लाइक ए स्ट्रक्चर, राइट? एंड आफ्टर दैट मैं कैंची से लेके इसको स्ट्रेट कट कर देता हूं एंड आई ओपन इट. सो क्या बनेगा गाइस? डेफिनेटली एक रेक्टेंगल बनेगा, piece of paper you can say, rectangular piece of paper. ओके, अब ये पीस ऑफ पेपर के डायमेंशन तुम्हें बताने हैं एंड आई एम क्वाइट श्योर ये बहुत इजी है. देखो, एक जो है ये तो हाइट जितना रहेगा. अब ये व्हाट इज दिस लेंथ? बिकॉज यहाँ पे क्या था, ये सर्कल था. आई एम सॉरी. ओके, सो दिस वाज अ सर्कल एंड यू नो द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. ये जो सर्कुलर लेंथ है ये पूरा स्ट्रेट लाइन बनेगा. दैट विल बी सर्कमफरेंस इज 2 pi r. So 2 pi r. That's how you can remember. So area of rectangle तो सबको पता है, it is length into breadth. So 2 pi r into h. This area will be 2 pi r h, which is nothing but the curved surface area. Curved surface area will be 2 pi r h, right? After that, let's come to the total surface area. Total surface area मतलब क्या? वो तो हमने इमेजिन किया था कि ये सर्कल्स हटा दिए एंड ऑल. लेट्स से अभी ये पेपर से बना है एंड ये सर्कल्स भी है, तो डेफिनेटली ये एरिया तो रहेगा 2 pi r h, राइट? बट एट द सेम टाइम ये सर्कल का एरिया तो pi r स्क्वायर है, फिर बॉटम सर्कल का भी pi r स्क्वायर है. सो 2 pi r स्क्वायर हो गया. 2 pi r h कर्व्ड सरफेस प्लस 2 pi r स्क्वायर.
so we can modify this formula as 2 pi r common and bracket में आएगा r plus h or h plus r, whatever you want to write. So that's the total surface area of this cylinder. Hopefully I'm not going fast and these are very easy things, so I don't think it's too much fast. Okay, so let's go ahead. So guys, hopefully you'll be able to remember curved surface area, total surface area and the volume. Do not just mug up it. Okay, तो mug up करोगे वापस भूल जाओगे. Try to get some logic कि ये कैसे आ रहा है. It's totally depends on, जैसे वो cuboid था तो square rectangle के area पे dependent था. Surface area I'm talking about. Volume तो मैंने बताया, area of base into height. For given that the top and bottom is same. Okay, then after that that's the easy way to remember, right? ओके आफ्टर दैट अगर यहाँ पे सिलेंडर है तो मैंने क्या किया, सर्कल का एरिया, देन ये रेक्टेंगुलर बनता है तो रेक्टेंगल का एरिया, दैट्स एज सिंपल एज दैट. ओके नाउ कोन के रिलेटेड कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं डायरेक्टली. डू नॉट गेट इनटू कि हर बार कि ये कैसे आया होगा एंड ऑल. ओके सो बट आई कैन जस्ट गिव अ फेयर आइडिया अबाउट इट. ओके सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कोन. द प्रॉब्लम इज, for cone, top and bottom are not same, but the thing is formula will remain same. For the volume I'll talk about. Okay, first thing we'll talk about RLH. R is the radius of this base and H is the height of this cone, and we call this hypotenuse side. Hypotenuse, you can say this is the slant height of a cone. For this triangle it is a hypotenuse. Okay, so relation between L, R, H, that's quite simple. R square plus H square is equal to L square, right? Or simply you can write L slant height of the cone is always equal to square root of R square plus its height square, right? After that volume के लिए अभी चेक करते हैं कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ही तो होना चाहिए ना. बेसिकली इसके लिए भी तो वही है. कौन का वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? अगर ये हाइट ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा आएगा, एरिया ऑफ बेस ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा आएगा, कैपेसिटी ज्यादा आएगा, राइट? सो इसके लिए क्यों नहीं है पाई आर स्क्वायर इनटू एच. You need to just modify one thing here, guys. देखो ये it is quite like cylinder. I can give you why I am doing it 1/3 करने की क्या जरूरत है, सबको पता होगा ये फॉर्मूला. So if you look at this, it looks like a cylinder, right? Just ये कट हो गया यहाँ से, तो 3 पार्ट में हो रहा है roughly. You can just remember this number 1/3. This is how you can remember this formula. Okay, it is as good as the cylinder. So I'll remove. Hopefully you understand. I'm just giving you the things to remember so that you do not forget that formula again. Okay, then let's talk about the curved surface area and the total surface area. Total surface area में सबको पता है एक बॉटम सर्कल है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हमें ये निकालना पड़ेगा ये क्या है. जैसे हमें सिलेंडर में अभी हमने ट्राई किया तो वो रेक्टेंगल बन गया उसको ओपन करने के बाद. So if you try this one, just I'll tell you just a rough idea. Okay, राइट सर्कुलर कोन के बारे में है ये. तो अगर ये पेपर से बना हुआ है and I remove that circle and I cut it from here, this is not going to be a sector. First thing, it has to be a triangle whose base is 2 pi r and the height will be slant height, that is L. Okay, that close to that, and this is how you know the area of triangle is half into base into height, that is 2 pi r into L. This is the way you can remember that formula. Okay, so curved surface area क्या होना चाहिए, pi r into slant height, and the total surface area will be pi r L, that is the curved plus एक सर्कल का एरिया जो बॉटम में है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. Don't get into the detail, you can simply remember this, and I hope that is sufficient to remember this formula, what the logic I say. Okay, easy to remember. Okay, then let's move to the next thing, that is sphere. चलो अभी ये फॉर्मूले तुम्हें थोड़े से याद रखने पड़ेंगे. देखो गाइस, सर्कल का एरिया तो सबको पता है, it is pi r square, right? So area of sphere you can remember it as 4 times as that of the circle.
देन वॉल्यूम इज 4/3 pi r cube. Why pi r cube? यहाँ पे कोई बेस नहीं है, राइट? So this is the base, you can say. This is the radius. So ये एरिया हो गया pi r square and this is the r height, pi r cube. और नीचे भी है, ये कट है. So 4/3 you need to remember that way, but I don't think it is that tough to remember. Just radius पे तो depend है guys. Volume is in cube and area is in square. So 4 pi r square and 4/3 pi r cube. That's easy to remember. The length of the largest rod, that is going to be a diameter. Okay, so let's go for the next. Oh, sorry, hemisphere. Hemisphere क्या होगा guys? It's a solid hemisphere. Okay, I'll write here solid hemisphere. Definitely a solid. Then chord surface area is 2 pi r square, क्योंकि स्पीयर के ये 4 pi r square था तो उसका हाफ, एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये एक pi r square ऐड हो जाएगा. सो 2 pi r square plus pi r square, that has to be 3 pi r square. वॉल्यूम इज क्वाइट सिंपल. वहाँ पे 4/3 pi r cube था. 4/3 का हाफ होता है 2/3. 2/3 into pi r cube. इजी टू रिमेंबर. अगर तुम्हें स्पीयर याद रहता है तो हेमिस्फीयर तो वैसे ही हो गया, half of that, half sphere. The next thing, okay, so अभी आते हैं triangular prism. Number of vertex कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, right? So number of vertex 6. Number of faces, कितने फेस है? 2 ट्राइंगल है एंड 3 रेक्टेंगल है, सो 5. So number of edges 3 plus 3 plus 3, it has to be 9. Then total surface area. Total surface area क्या होगा? देखो, twice the area of the triangle plus twice the area of the rectangle. That's easy. अब डोंट टेल मी कि ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का एरिया, तो उसके फॉर्मूले तो हमने पहले ही सीखे हैं 2D में. आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट. ओके, यू कैन मॉडिफाई दिस फॉर्मूला इफ यू टेक इक्विलैटरल ट्रायंगल हियर. लेट्स से दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. फिर ये हाइट लेते हैं h. देखो गाइस, सिंपली लॉजिक क्या है इसका, व्हाट आई विल डू, ट्रायंगुलर प्रिज्म, देन I can write like this. मैंने वर्टिकल क्यों लिखा, क्योंकि वर्टिकल इसलिए रखा क्योंकि हमें क्या सेम चाहिए, टॉप एंड बॉटम सेम हो गया. तो ये हो गई अपनी हाइट एंड दिस वॉल्यूम विल बी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इनटू हाइट. मैंने क्या बताया था वॉल्यूम के लिए, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, राइट? तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इनटू h. So let's say this is h, this is okay. अब तुम अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला बना सकते हो. इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इट विल बी √3/4 a square into h, राइट? देन यहाँ पे अगर तुम ये ट्रायंगल के साइड a लेते हो और ये h लेते हो, सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ √3/4 a square, सो दैट विल बी √3/2 a square. 2 ट्रायंगल का एरिया प्लस थ्राइस ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा वहाँ पे, AH, थ्राइस AH. तो इफ यू वांट टू मॉडिफाई दैट फॉर्मूला यू कैन डू दैट, बट दैट्स नॉट नेसेसरी. वो तो डेफिनेटली आ जाएगा उसके बाद, बिकॉज ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, ये सब तो हम पहले सीख चुके हैं. लेट्स गो अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द रेगुलर हेक्सागन, आई वांट ऑल ऑफ यू टू थिंक इट फॉर अ मिनट सो दैट आई विल प्रोसीड. ट्राई टू रिकलेक्ट गाइस. हमने ये ऑलरेडी, मैंने पहले भी एरिया ऑफ हेक्सागन काफ़ी बार पहले भी कराया था. नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऊपर, 6 नीचे, टोटल कितने होंगे
12 what I say is the number of face कितने हो जाएंगे 6 rectangles 2 hexagon. Number of edges 6 vertical 6 top and 6 bottom. Total surface area is 6 times into area of rectangle. That's simple common sense. I don't think ये पढ़ाने की भी जरूरत है किसी को, but one thing I want you to teach, that is area of hexagon. वो कैसे आएगा वो हम सीखेंगे. Twice into area of that hexagon. वो hexagon का एरिया तुम्हें निकालते आना चाहिए. चलो एक काम करते हैं, let's say this is A and this is H. वॉल्यूम बताना है तुम्हें. एरिया ऑफ hexagon into height h. So one thing we are supposed to do here is, what is the area of that hexagon? So I'll draw it here. Area of regular hexagon. Okay, regular means all sides are same and all angles are same. So a और सबको पता होगा कि hexagon का ये जो एंगल होता है that is 120 डिग्री, right? तो अगर मैं ये डायगोनल्स कनेक्ट कर देता हूँ, ये हम पहले भी सीख चुके हैं, मैंने ये पॉलीगॉन में भी बताया था, इवन हमने ट्रायंगल्स में भी किया था. तो गाइस ये 120 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये 120 का हाफ हुआ होगा. सिमेट्री है फिगर, ये भी तुम बता सकते हो. दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, इट हैज टू बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो ये सारे ए हो जाते हैं. एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया सबको पता है. Area of equilateral triangle is √3/4 into a square. अब ये एरिया अगर तुम्हें पता है तो यहाँ पे कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल है? 1 2 3 4 5 6. तो 6 टाइम्स ऑफ √3/4 into a square. अगर तुमने इसको सॉल्व किया होगा तुमने ऐसे भी याद रख सकते हो 3√3 तो 3√3/2 square. That's what you can remember. Just a minute. Okay, I'm sorry. Okay, so √3/4 a square, that is the area of the hexagon into h. Okay, यहाँ पे तो सब आ जाएगा. फिर 6 into ah हो जाएगा. 6ah प्लस 2 और 2 तो हट जाएगा यहाँ पे, हाफ होगा 3√3 a square. That's the surface area and this is the volume. और ये क्यों चल रहा है? बिकॉज वॉल्यूम क्या होता है? एरिया बेस. यहाँ पे टॉप एंड बॉटम सेम होना चाहिए. टॉप एंड बॉटम अगर सेम है तो इट इज बेस एरिया इनटू हाइट. सो होपफुली यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए. एंड होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट एंड हाउ टू रिमेंबर दिस थिंग्स. ओके, so there are too many formulas. theorem in geometry हम already जब हमने स्टार्ट किया था लाइन्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, उसमें ही हमने काफी सारे फॉर्मूले, थ्योरम्स देख लिए. देन डिपेंडिंग ऑन दैट 2D शेप्स, हमारे 3D शेप्स के कुछ फॉर्मूले डिराइव होते हैं. सो 3D शेप्स के फॉर्मूले डेफिनेटली तुम्हें लॉजिकली याद रखने की जरूरत है. नीड नॉट टू मग अप इट. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. चलो गाइज, हमने प्रिज्म देख ली है. देन नाउ लेट्स कम टू द पिरामिड. ओके, ये पिरामिड है एंड लेट्स से दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल. अभी मुझे बताओ, सारे एजेस ए है. ओके, इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. यू नीड टू राइट ऑल द थिंग्स. सो A, all the edges are A. So how many vertices? There are 4. Number of faces, कितने faces है? There are 4 triangles. The number of edges, 3 top, 3 bottom, that is 6. Then total surface area, it is 6 times of area of that triangle. 6 times of area of triangle, that is अगर equilateral triangle है 6 times of √3/4 into a square.
that is 3 root 3 by 2a square. That is as good as regular hexagon, क्योंकि regular hexagon में भी तो 3 equilateral triangle थे, यहाँ पे भी sorry कितने 6 equilateral triangle थे, यहाँ पे भी 6 sorry it's not 6, my mistake, it is 4, sorry it's not equal to regular hexagon, my mistake is there were 6 edges. So 4 into area of triangle, so root 3 by 4, it is root 3a square, not 3 root 3a square. Root 3 into a square, right? Then let's talk about the volume. अभी वॉल्यूम में क्या प्रॉब्लम होगा, जब भी ये पॉइंटेड टॉप रहेगा, रिमेंबर दिस नंबर 1/3. जैसे हमने कोन में क्या किया था, सिलेंडर के लिए क्या था, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. कोन के लिए आया तो हमने क्या किया, पायर स्क्वायर एच ही रखा, बट 1/3 कर दिया, राइट? पायर स्क्वायर एच इनटू 1/3. तो यहाँ पे भी नॉर्मल अपना आंसर क्या होना चाहिए, लेट्स से दिस इज द हाइट h, ओके, हाइट दैट वी नीड टू कैलकुलेट, ओके. It should be a perpendicular, so h. So volume is area of the triangle, that is the base area into height, but इसका क्या करना पड़ेगा, 1/3, because नहीं तो फिर वो प्रिज्म के लिए था. एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू हाइट प्रिज्म के लिए, प्रिज्म इन द सेंस टॉप एंड बॉटम सेम, जब ये ट्रायंगुलर फेस, ट्रायंगुलर टॉप एंड ट्रायंगुलर बॉटम, इसके लिए इतना पार्ट है. एंड पिरामिड जब आएगा तो उसका 1/3 हो जाएगा. दैट्स द इजी टू रिमेंबर. आई डोंट थिंक it's quite challenging. It is even challenging to remember that part. That's really easy. Okay, अब नेक्स्ट फॉर्मूले तो तुम खुद से बना सकते हो. I'm quite sure. यहाँ पे वर्टाइसेस कितने होंगे, 4 और 1 5. Then number of face, 4 ट्राइंगल 1 स्क्वायर 5, right? Then we have number of edges, 4 vertical and 4 at bottom, that is 8. Then total surface area has to be area of square plus 4 times into area of triangle, as simple as that. Okay, so let's say ये equilateral triangle है and ये A है, तो अभी आंसर क्या होना चाहिए, a square plus 4 times of root 3 by 4a square कितना होगा, it will be root 3 into a square. That's what you can remember for the area. Then let's come to the volume, and I'm quite sure मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. Let's say this is the height h. Height is the point which will connect the center of the circle, center of the square, okay, and which will be perpendicular to this plane, okay. It's perpendicular to this. So this is the h. वॉल्यूम क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इनटू हाइट, बट ये पॉइंटेड है, सो यहाँ पे 1/3 होगा. सो यू कैन सिंपली से इट इज 1/3 into a square h, that is the volume. Mensuration is the easiest thing you can, easiest formula ever to remember, guys. इसमें तुम थोड़ा सा लॉजिकली कनेक्ट करके याद रखोगे, डेफिनेटली हाफ एन आवर तुम स्पेंड करो, तुम्हें सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे एंड यू विल नेवर फॉरगेट इट अगेन. तुम्हें याद नहीं आएगा, ऐसे हो सकता है कि सोचना पड़े थोड़ा सा, बट डेफिनेटली तुम गिव इट थॉट फॉर 10-20 seconds, यू कैन रिकलेक्ट दैट फॉर्मूला. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो आई एम डन विद द टीचिंग पार्ट. एज आई सेड, क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होंगे आज, so hopefully all of you are ready for the questions. ओके मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, बट क्वेश्चंस आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक लेवल, बिकॉज बेसिक क्वेश्चन अगर मैं मेंसुरेशन पे करवाऊंगा गाइस, इट विल बी जस्ट यू नीड टू प्लग इन द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी सेंस डूइंग दैट, because once you know the formula and you have straightforward question based on that, so definitely वो solve हो जाएगा. So मैंने बहुत easy level नहीं रखे हैं, but definitely mensurations के लिए मैं practice questions 5th session में करवाऊंगा, and that is not going to be only related to mensuration. The 5th session of geometry will be combined questions from triangles, circles, quadrilaterals, polygons, then mensurations, completely mixed. Okay. So easy to moderate questions. I'm quite sure all of you can do the practice at your own if you watch this session for half an hour
and you go and solve any easy to moderate questions from the mensuration part, I can guarantee you'll be able to solve that. Okay, because बहुत straightforward है and simply तुम्हें values put करने फॉर्मूले में. If you know the formula, you'll get the answer. It's as simple as that. Okay, so मैंने जो questions किए हैं, these are quite tricky now. यहाँ पे भी हम फॉर्मूले में वैल्यूज ही पुट अप करेंगे, बट द थिंग इज थोड़ा सा लॉजिकली पूछे हैं, दैट्स इट. ओके, सो कोनिकल टैंक, सो कोन है तो तुम्हें पहले ये माइंड में आ जाना चाहिए क्या क्या फॉर्मूले थे अपने. सो लेट मी क्विकली रिमाइंड यू द फॉर्मूले बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. कोन के लिए क्या था गाइस, वॉल्यूम कितना था, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, दैट वाज रिलेटेड टू वॉल्यूम. अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, मैंने ये भी कुछ सिखाया था तुम्हें, हाइट, देन स्लैंट हाइट, देन रेडियस, ये अभी हमने 20 मिनट्स पहले देखा. ओके, सो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जो था कोन का, इट वाज पाई आर इंटू एल, एंड द टोटल सरफेस एरिया TSA for total surface area, it is pi r square plus pi r l. इससे ज्यादा और कुछ यूज नहीं होने वाला. ओके, बट एनीवेज दिस इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ओनली. चलो, वॉल्यूम से रिलेटेड कैसे हैं, वहां पे देखो, पढ़ो सब लोग, क्या लिखा है. दिस इज रिलेटेड टू कैपेसिटी, कैपेसिटी रिलेट्स टू वॉल्यूम. अगर इसको पेंट करना है, ऐसे कुछ होता सिचुएशन, तो दैट विल बी रिलेटेड टू सरफेस एरिया. ओके, so conical tank, but the problem is it is clearly mentioned here with the vertex at the bottom. Guys, ये question बहुत tricky है and really interesting questions. I want all of you to try it at your own. So those who are watching this video, they can quickly give it a try by the time I can explain the question. Okay, okay, so you need to draw it like this. Okay, a conical tank with vertex at bottom, मतलब ये उल्टा रखा हुआ है, मतलब टैंक है और कोनिकल टैंक, बट ये उल्टा कोन है, राइट. वर्टेक्स एट बॉटम, ये टैंक है. देन द हाइट ऑफ 24 यूनिट्स. This height from, देखो height मतलब ये होता है guys. Okay, do not calculate the slant height. This is the height. So from this point to this point, the distance between, this is vertical distance, this is the height. Height is 24. Okay, then the volume is 216 liters. मतलब इसका कैपेसिटी है 216 liters. Complete capacity. Okay, so what will be the volume of the water in it if, यहाँ पे दो questions है. Okay, so I'm going to solve just part A. मैं part A solve करूँगा, then I'm going to erase all things and then I'll be solving the part B on the same slide. Okay, so water is filled to height 8 units. हाइट 8 यूनिट. सो डेफिनेटली जब तुम पानी ऐड करोगे तो पानी तो नीचे रहेगा. सो 8 यूनिट की हाइट तक ही भरा हुआ है. ये 24 है, मतलब ये 2/3 हाइट तक भरा हुआ है. तो हाइट इज जस्ट 8. So I'll just remove this and I can explain you what exactly it is. So it is filled to this height only. So अभी यहाँ पे रेडियस कितना रहेगा ये हमें नहीं पता. ओके, एंड एनीवेज हमें रेडियस ही नहीं पता है. So let's say this is the capital R. We don't know this radius. Okay, but इतना पार्ट वॉल्यूम भरा हुआ है, which is the height of 8 centimeter. Those who are watching live, they can quickly drop in the comment section if you have any answer. I'll call it as capital H, the complete height, and I'll call this as small h, this height. और don't tell me ये 1/3 हो रहा है, तो यहाँ पे 1/3 कर देते हैं 216 का. 1/3 of 216 नहीं होगा guys. सुनो, it's simple common sense. Basically
अगर ये सिलेंडर होता, मैंने बताया कि टोटल कैपेसिटी एंड जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस क्वेश्चन, ओके। जस्ट लिसन, अगर इसका कैपेसिटी 216 है और मैं इसको हाफ हाइट तक भरता हूं, तो ऑफकोर्सली अगर मैं हाफ करूंगा तो इधर 108 आएगा, इधर 108 आएगा, बट कोन की केस में तुम हाफ भरोगे तो नीचे 108, ऊपर 108, ऐसे नहीं होने वाला है, राइट। सो इसलिए जब हाफ हाफ नहीं हो सकता तो 1/3 भी नहीं हो सकता है, बिकॉज वो सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर, टॉप एंड बॉटम दोनों सेम नहीं है, राइट। तो होपफुली यू गॉट दैट पॉइंट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट इट। एक्चुअली जब ये क्वेश्चन तुम्हें करना है तो इसका बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये डायग्राम का, ठीक है। रफली तुम्हें क्वेश्चन समझने के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स you are doing it for the first time, but if you know the question type then you can directly solve it, okay। so what I'll tell you one thing, we are not sure कि इसका वॉल्यूम तो 1/3 नहीं होगा, राइट, बट एक चीज कंफर्म है, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो रेडियस डिक्रीज होगा तो हाइट भी डिक्रीज होगा। तो ये जो h है, h is 1/3 of capital H। I'll just remove the values, I don't need this values, I'll just generalize it for the cone and we'll solve it, okay। 1/3 of height, so definitely ये जो small radius होगा, let's say this radius is r, तो अगर तुम बीच में लगो ना तो radius exactly half होगा, तो definitely this small r has to be 1/3 of the capital R। That's what I want you to conclude, right? Hopefully you understood this. All of you, those who are watching me live, they can quickly drop in the comment section, guys, if you have any doubt, and if you understand this, give me a thumbs up। क्या ये सही है? देखो वॉल्यूम तो 1/3 नहीं होगा, ये पक्का है, बट अगर हाइट कम होता है तो रेडियस भी कम होता है, तो जैसे तुम हाफ हाइट तक जाओगे तो रेडियस हाफ होगा, दैट्स व्हाट यू कैन रिमेंबर। अच्छा, ये प्रूव भी कर सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग गेटिंग इनटू द प्रूफ, बिकॉज तुम सिमिलैरिटी ऑफ फिगर से ये याद रख लो, इसके लिए तो भी चलेगा। इसको तुम कुछ लोगों को मैंने सबको ट्रायंगल्स पढ़ाया है और इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाते हैं, राइट। यू कैन प्रूव इट बाय द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंड यू कैन प्रूव दैट वहां पे रेडियस हाफ हो जाएगा, हाफ हाइट पे, ओके। सो what we can that's really simple proof, you can do it at your own, so I'm not going to do it for you, okay। Then radius अगर हाइट अगर 1/3 हुआ है तो रेडियस भी 1/3 होगा नीचे जाते हुए यहाँ पे। सो इतना कैपेसिटी हमें पता है, टोटल कैपेसिटी हमें ऑलरेडी पता है। सो कैन आई से वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल कोन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन एंड द वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन क्या होगा गाइस? क्या था कोन का वॉल्यूम? 1/3 into pi r square h, and the volume of this is my method to solve, and I think this is the shortest way, and again a reuse of ratio। मैं काफी बार स्टूडेंट्स को बताते रहता हूँ कि रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक जो अरिथमेटिक के वो डेफिनेटली करने चाहिए, बिकॉज वो तुम्हें कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट क्वांटिटेटिव एबिलिटी एज वेल एज इन LRDI में जो डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट है वहां पे भी काम में आता है। Then volume of the smaller cone will be 1/3 into pi into small r into small h। Hopefully you understood that, okay। So definitely ये 1/3 मैं रेशियो ले रहा हूँ यहाँ पे गाइस, सिंपली, okay। So r square h यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे r small r into h, ये है small r, ये है h, small r is 1/3, it is r square, sorry, कितना होगा 1/3, तो 1/3 पाए तो कैंसिल हो गया। r का वैल्यू रखो 1/3r एंड उसका स्क्वायर करना है, तो क्या होगा 1/3r ब्रैकेट स्क्वायर इनटू 1/3 into h। Hopefully you understood this, and you'll get the ratio as r square h is to 1/9, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा 1/9 into 3 is 27 r square h। I'm quite sure, मुझे सबको ये सिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये वॉल्यूम का रेशियो होना चाहिए 27:1। दैट मीन्स अगर इतने पार्ट में 1 लीटर पानी है तो ये पूरे बिगर कोन का कैपेसिटी 27 होना चाहिए, राइट।
So now we can just do the simple cross multiplication. Okay, so अगर बिगर वॉल्यूम 27 है तो स्मॉलर वॉल्यूम, स्मॉलर कोन, दैट मीन्स दैट आई मीन टू से इज 1, बट ये तो 216 है गाइस, तो 27 इंटू कितना के तो 216 होगा 27 it is 27 is 3 cube, 216 is 6 cube, तो 2 cube 8 times होना चाहिए, so it has to be 8. 8 7s are 56, right? 216, so into 8. So definitely अगर ये total 216 लीटर का है तो ये जो नीचे का पार्ट आएगा 1/3 हाइट में, जहां पे हाइट 8 1/3 कहां से आया, होपफुली सबको समझा, ये 24 का 8 हो गया, दैट इज 1/3 ऑफ द हाइट. सो दिस वॉल्यूम हैज टू बी जस्ट 8 liters. Those who are watching, they can quickly drop in the comment section if you have any doubt, and if you understood, you can have a note if you want to note it down. Just give it a try for the next question. I'll give you 30 seconds or 1 minute to grasp all this and try this question, because उसके लिए तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बिल्कुल. So this is the part A. So part B I can solve it here only. I'm not going to repeat complete thing now. देखो actually ये question कितना short है अभी. यहाँ पे it is turn upside down. That's the only change we need to consider. So what I'll do, I'll just draw the diagram once again and just will quickly finish it. तो अगर तुम्हें फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया तो मुझे सेकेंड पार्ट, आई एम क्वाइट श्योर दोज हु हैव अंडरस्टूड द पार्ट ए, they'll definitely get the answer for the part B at their own. चलो, तो क्या करना है, सीधा रख देना है. अभी पहले अपसाइड डाउन दिया हुआ था क्वेश्चन में. नाउ दिस बिगर कोन, सिंपल, और डोंट टेल मी आंसर हाफ तो नहीं होगा, ये सबको पता है अभी. तो हमें ये पता है कि इसको हाफ हाइट तक भर दिया, राइट. सो हम क्या करेंगे, अभी ये नीचे के वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालने मत जाओ, ये हमें निकालना है. बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन कैलकुलेट द बिगर कोन वॉल्यूम, तो हमें पता है, स्मॉलर कोन का निकालते माइनस कर देते, यू विल गेट द रिमेनिंग वैल्यू, राइट. सो दिस दैट द हाइट 12, टोटल हाइट वाज 24, तो हाइट इज जस्ट हाफ्ड. तो अगर यहाँ पे रेडियस r है तो यहाँ पे रेडियस r/2 होगा. यहाँ पे हाइट अगर h है तो ये हाइट h/2 होगा, क्योंकि इधर 24 था, अभी हाइट हाफ है, राइट. सो दैट्स रियली सिंपल एंड यू कैन क्विकली टेल मी वॉल्यूम ऑफ बिग कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन. ये रेशियो मुझे चाहिए, डोंट टेल मी द फॉर्मूला. 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये जो है आर स्क्वायर एच पे डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड करेगा r/2 होल स्क्वायर इंटू 1/2 h. तो सबको पता है कि यहाँ पे आर स्क्वायर एच आ रहा है, और यहाँ पे आर स्क्वायर एच अपॉन 8 आएगा गाइस, 4 नहीं आएगा, 2 स्क्वायर 4 होगा, और इंटू 2 दैट इज 8. तो ये रेशियो जो है ये 8:1 आएगा. मतलब अगर ये पूरा बिगर कोन अगर 8 है, बिगर वॉल्यूम अगर 8 है, तो ये ऊपर का पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज द स्मॉल पार्ट, ओके, एंड दिस कंप्लीट इज द बिगर कोन. So big part is 8, the smaller cone's capacity has to be 1, but the bigger cone's capacity is 216. We have to multiply it by 27. वहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया था 27 को, यहाँ पे 8 को 27 से मल्टीप्लाई, वन एंड द सेम.
तो ये आया 27. नाउ द लास्ट पार्ट, डू नॉट मेक मिस्टेक हियर. ओके देखो ये 27 एम्प्टी रह जाएगा, राइट, एंड जो नीचे रहेगा दैट विल बी 189 बिकॉज टोटल इज 216. दिस विल बी filled. Right, so answer for the first question, it was 8. And this question it is 189. That's it guys, so let's go ahead for the next question. This one is simple question. You can try it at your own. You can generalize the formula like we did in the previous question. So जो भी मैं question कर रहा हूँ ये बहुत easy तो definitely नहीं है, but definitely तुम्हें अगर पता है कुछ, तुमने generalize formula वगैरह एक बार किया हुआ है and by this way, तो definitely फिर easy लगेगा. Next time अगर आएगा तो definitely हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा. Typical question types. Okay, so sphere of radius 14 meter, 14 unit cell, let's say, is melted down to form into 8 smaller identical spheres. So definitely उनके radius अलग अलग होंगे. रेडियस को 8 पार्ट में नहीं डिवाइड किया है, उसका जो वॉल्यूम था उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा. सो वॉल्यूम ऑफ द all 8 smaller spheres will be exactly equal to the volume of the bigger. Okay, then what is the radius of the each smaller sphere? So if you want to solve this by step-by-step method, I can give you the method. 4 by 3 pi r cube, that's the volume of the big sphere. Okay, I'm not going to use this 14 and 14 and all. Let's say radius of the small is r and the radius of the bigger square is 14. So I'll just generalize first thing. Okay, so this volume of the bigger sphere must be equal to, कितने small sphere बनाए हमने उससे, 8 small sphere बनाए. So 8 into volume of the small sphere, right, and we know 8 into 4 by 3 pi into small r cube होगा. अब ये जो पार्ट है गाइस ये तो कैंसिल हो रहा है, 4 pi by 3, ये 4 कैंसिल. तुम सिंपली बोल सकते हो r cube has to be equal to 8 r cube. 8 किसका क्यूब है, 2 cube into r cube has to be equal to 2r into bracket cube. Take the cube root. R has to be equal to twice of small r, so small r has to be equal to r by 2, and that's why I can simply put the formula. मैंने तुम्हारा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया और ये तुम्हें जनरलाइज करके भी दे दिया, राइट. इजी टू रिमेंबर गाइस. 14 by 2 आंसर क्या होना चाहिए, 7. रेडियस बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा यहाँ पे, ओके, बिकॉज वॉल्यूम जो है वो रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करता है. तो स्मॉल r is 7. Then what is the ratio of the new total volume to the original? That remains same, 1:1, and that's the simple concept question. Not to be think too much of it. Okay, then what is the ratio of the new total surface area to the original surface area? That is going to be a different thing, because the original surface area for the original sphere, it was 4 times of pi into capital R square. गाइस ये 14 की कोई जरूरत नहीं है, तुम जनरलाइज करके बता सकते हो, यहाँ पे जनरलाइज कर सकते हो इसको. और 8 छोटे स्पीयर है जिनका सरफेस एरिया रहेगा 4 pi into small r square, and we know small r is r by 2. तो 4 pi तो कैंसिल ही कर दो पहले तो r square into 8 into small r square मतलब क्या होगा, r by 2 whole square. तो r square तो कैंसिल होने वाला है. r square is to 8 into r square by 4. r square gets cancel, यहाँ पे आएगा 2
तो क्या होना चाहिए, वॉल सरफेस एरिया जो है वो डबल हो जाएगा, रेशियो 1:2 रहेगा। डेफिनेटली सरफेस एरिया बढ़ेगा अगर तुम उसको स्प्लिट करोगे स्मॉल स्पीयर्स में। तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम, सरफेस एरिया विल चेंज, राइट। Hopefully all of you understood this part and it's not that tough for any one of you. Okay, so one more question for the day. Quite tricky. I want you to try it. So if you want to try, you can do it quickly. I'll give you 1.5 minutes. 1.5 minutes from now. I'll wait for 90 seconds. If you have anybody is having answer, they can quickly drop in the comment section. Think about it. 90 seconds, it's not compulsory तुम्हें आना चाहिए. I'll start explaining the question. First thing, those who are watching it, just try a 2-liner question है, सोचो 1.5 minute. Then I'm going to explain the question. By the time you can also try. तब तक तो हो जाना चाहिए. It should not take more than 2 minutes once you understand the question. So a sphere of radius r is cut by a plane at a distance of h. Sphere तो सबको पता है, radius r. That sphere is cut by a plane, solid sphere. Okay. At a distance of h from its center, thereby breaking this sphere into 2 different pieces. Of course वहां से कट करेगा, 2 different pieces होंगे. The cumulative surface area of these 2 pieces is 25% more than that of the original sphere. Okay, so we are supposed to find that value of that distance h from the center. Okay. In terms of radius, of course, we don't have any values here. Radius का actual value तो हमें नहीं पता. अगर radius दिया होता तो हम वो distance भी निकाल पाते. So we are supposed to find that h, value of h in terms of the radius. Okay, so slightly tricky question. Listen, don't judge it. Okay, आंसर ऑप्शन से मैं गेस करता हूँ एंड ऑल, वो कुछ वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो तो रैंडमली लगाने जैसा ही होगा फिर. ओके, डोंट ओवरथिंक एंड इट्स रियली अ सिंपल क्वेश्चन यू कैन हैव. क्यूमुलेटिव का मतलब होता है टोटल. ओके, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड हियर. आई विल जस्ट शो यू बाय द डायग्राम. ओके, so let's say this is the radius r and this is the height. Okay, ये सर्कल जो मैंने ड्रॉ किया, that's the plane you can say. Okay, this is the plane which cut. तो यहां से अगर मैं कट करता हूं तो इसके 2 पार्ट होंगे गाइस, राइट. दिस इज द हाइट ऑफ AC is h. ओके, अब मुझे बताओ सबसे पहले ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना रहता है, 4πr². अब अगर मैंने ये स्फीयर के 2 टुकड़े कर दिए, बीच में से उसको काट दिया, अगर मैं बीच में से इसको काट देता हूं तो क्या होगा, इसके 2 पार्ट होंगे. दिस पार्ट. अब इसमें क्या होगा, ये सरफेस एरिया तो चेंज ही नहीं हुआ, बट ये जो नीचे जो है एक एक्स्ट्रा सर्कल यहां पे बन गया. तो ये सर्कुलर जो है ये एरिया ज्यादा बढ़ गया, राइट. द सेम वे
जो नीचे रह गया वहां पे एक ऐसा फेस सर्कुलर फेस क्रिएट हो गया, तो ये एक्स्ट्रा एरिया बन गया, तो डेफिनेटली ये एरिया यहां से बढ़ जाता है, राइट? एंड वी डोंट नो व्हाट इज दैट रेडियस इज, ओके? So let's say this is R. I'll just draw here. Let's say this part is X. This will also be X. ये तो chord का intersection. Okay. This is B. Okay. So ये X है, ये X है, and we know that X has to be X square plus H square has to be R square. तो ये तो हो जाएगा X. Then we know this surface area, ये कितना परसेंट बढ़ा? 25%. मतलब ओरिजिनल अगर 100 था तो बाद में 125 हो गया. इट इज इंक्रीज बाय 25%. 25% किसका? 4 पाई आर स्क्वायर का. ओके, तो इफ आई कैन आई से ये जो इंक्रीज हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेसिस हुआ है, ये एक्स है, तो ये सर्कल का एरिया कितना होगा गाइस? पाई इंटू एक्स स्क्वायर. दिस इज पाई इंटू एक्स स्क्वायर. तो कितने से इंक्रीज हुआ है? 25% is nothing but 1/4. तो कैन आई से 1/4 of 4 pi r square original surface area has to be equal to twice of pi into x square. Is it right? So pi gets cancelled. So can I say r square is equal to 2 into x square? Hopefully you understood that part. R square is 2x square, so I can write x square as r square by 2. Okay, so that's the end of the question. चलो, हमने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाना है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम. I'll write it again. x square plus h square is r square. x square का वैल्यू हमने अभी निकाला, which is r square by 2 plus h square equal to r square. If you take this side, h square will be r square by 2. ये हाफ इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर 1 है, 1 minus 1 by 2 हाफ हो जाएगा, राइट? So h has to be r divided by √2. that is answer option A. Hopefully all of you understood this part, and this one is easy question. समझने में थोड़ा सा ट्रिकी है. Once you understand it, it should not take more than a minute to solve. Okay. Okay guys, so that's it for the day. Those who are willing to go for the plus subscription, I'm going to start with the plus course. I'm going to start with the numbers. So this Friday from 21 August, I'm going to start with the plus course. So what you need to do here, you can just there are many benefits, like guys, you'll be interacting with me. There is features like leaderboard, and you'll get the mock test to assess your information for your assessment, and you'll get the complete support for your preparation. So these are my recommendation to go for the plus course of Unacademy, and you can avail 10% of discount just by using this code SHAM1. So do not forget to use this code if anybody is willing to go for the plus subscription of Unacademy. So see you there guys on Friday 21st August. I'll be starting with the numbers module, and I'll be continuing with few more modules. Okay,
Those who are new to channel, guys, quickly subscribe to channel, like, share, comment, and do not forget to press the bell icon so that you'll be notified about our upcoming live session. And you can also join us on Telegram group, where you'll be getting the PDF material for each and every session that we conduct here, as well as on the Plus platform of Unacademy. That's it for the day, guys. See you. Good night.